The FIA, the sport. Now let's see what the problem in this basic editing. Some few things I wanted to check this video, how you are performing, as well as what's the problem into it. The FIA. I'm just checking the basically technical details that you are missing. I'm not focusing on the content, what you have done right or what's wrong. I'm just focusing basically on this editing, which is like जो very common है, right? जिसे देख के इंसान कहेगा हाँ ये गलत है या सही है, right? अब हम उसे देखते हैं, आप फिर उसको समझिएगा, उससे सही करिएगा. The sport's governing body has made significant changes to the DRS regulations for some of the upcoming tracks. ये आप जो zoom out देख रहे हैं और ये zoom in हो रहा है, बहुत fast हो रहा है आपका, ठीक है? मैं भी हल्का सा देख चुका था, इसलिए मैं पहले ही जान रहा हूँ. बहुत फास्ट हो रहा है, इसको धीरे करिए थोड़ा सा, समझ रहे हैं? इतनी फास्ट नहीं जाना चाहिए. In an effort to improve the spectacle of Formula One. So, without further ado, let's get right into it and talk about the changes, their impact, as well as ये देखिए कितना फास्ट जा रहा है. some other drama involving the FIA. Following ये जो स्पीड है ना, the first year of the new ये स्पीड मेंटेन किया generation of cars, it was widely accepted that at some venues ये इमेज की क्वालिटी देख रहे हैं आपने क्या लगाई है? क्या इससे अच्छी इमेज नहीं मिल सकती थी आपको, या कोई वो DRS passes had been too easy, while at others the zones were too short. The FIA. ये स्पीड सही है, इसको देखिए जहां पे आप, तो इससे क्या पता चल रहा है कि छोटी जगह पे अगर आप वही कॉपी पेस्ट मारेंगे, लेट्स से स्केल का जूम इन जूम आउट, तो वो खराब हो जाएगा. समझ गए ना आप इस बात को, राइट? It has now disclosed that adjustments will be made at the Bahrain, Jeddah, Melbourne, Baku and Miami circuits. अब देखिए जब इस तरह का सीन आता है, जब झटके से छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, ये बेसिक एडिटिंग है. जब आपके पास सेकेंडों में जगह है, आपके पास नहीं बचा हुआ है स्पेस, तो आप उसमें मोशन ना डालिए. समझ में आ रहा है मेरी बात? ये झटके से मतलब फिर आप, क्योंकि सीन नहीं देख पा रहा ना इंसान क्या हो रहा है, इससे इंसान शुरू के 10-30 सेकंड में वीडियो छोड़ चला जाएगा. यहाँ पे आपको ये सीन है तो इसको नॉर्मल दिखाना चाहिए. इतनी जल्दी जल्दी चेंज होगा तो नहीं समझ में आएगा. आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी शायद. Melbourne, Baku and Miami circuits to better balance things after carefully examining the data from last season. The specific changes being made at each track have not been confirmed, but we know that Melbourne will receive a fourth DRS zone to help close car. Let me check कि मेलबर्न की ट्रैक है कि नहीं. मेलबर्न F1 track. Let's say Albert Park and I'll see the image if I can see. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पता चलेगा ना कि वो ट्रैक है अभी कि बेसिकली नहीं, कि आप कोई भी फोटो लगा दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को ट्रैक तक पता होते हैं. ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंड सी ये है, ठीक है ना, डील सऊदी अरेबिया. समझ गए ना? ये चीज हम जरूर देखेंगे. या ये किसी भी जो, मतलब मैं तो आपको सिर्फ चेक करने का देख रहा हूँ, जो फैंस होंगे उनको पता होगा यहाँ की ये सर्किट, ये जो मुड़ा है ये कैसा है, उनको तुरंत क्लियर होगा. ठीक है, तो यहां से तो आप बच गए. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग कहाँ थे? वापस उसी पे आते हैं. ओह माय गॉड, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल. ठीक है. Cars up. As well as the DRS zones being tweaked, the FIA has confirmed that resurfacing work is being carried out in Baku and Miami, with Jeddah pushing on with circuit tweaks to improve visibility. The F1 Commission also decided to relax the rules regarding what radio messages can be sent between drivers and teams moving forward during a meeting in London to discuss a number of issues. Additionally, adjustments will be made to the way Parc Fermé is set up during sprint race weekends. ये देख रहे हैं ना आप, जो इमेज यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत गलत है. F1 एक और आता है जिससे उसकी क्वालिटी आती है, बस उसी से डाउनलोड किया करिए. यहाँ ये क्वालिटी लो क्वालिटी चलेगी नहीं कोई भी, ठीक है ना. Teams will have more freedom to replace parts that are prone to damage, and self-declared forms from the teams will be used more frequently as a way for the teams to better police themselves. ये देख रहे हैं आपके ये जो सीन चेंज हो रहे हैं, ये बहुत गलत चेंज हो रहा है. इसमें मिली सेकेंड्स में आप क्यों प्रॉपरली कट नहीं करते हैं? देखिए उसको कैसा आ रहा है. मैं आपको मिली सेकेंड, जब ये बेसिक एडिटिंग मैं बताने के लिए, मतलब मैं नहीं हूँ, राइट? ये आपको खुद आनी चाहिए सब चीजें. Teams will have more. ये देखा आपने एक सीन कैसे जा रहा है. आप और जो कंपेनियन जो मेट्स हैं, जितने भी F1 वाले एडिटर्स, ये देखें सब चीज. Adjustments will be made to the way Parc Fermé is set up during sprint race weekends. Teams will have. ये देखा आपने कैसे एक सेकंड के अंदर सीन चेंज हो गया. तो आप पहले ही उस सीन को काट के रखिए, तब यहां से शुरू करना चाहिए था आपको. ये ऐसे झटके से यहां से नहीं आना चाहिए था. Race weekends. Teams will have. ये देखा, ये मिली सेकेंड का प्रॉब्लम है. या तो आप काली स्क्रीन छोड़ देते हैं या तो ऐसा करते हैं आप लोग, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा. More freedom to replace parts that are prone to damage, and self-declared forms from the teams will be used more frequently as a way for the teams to better police them. ये देखा आपने बीच में फिर एक सेकंड ऐसे निकला.
आप सही से रखिए वीडियो को, ये देखिए, फिर मिली सेकंड का सीन देखिएगा अभी। As a way for the teams to better police ये themselves. देखा आपने, एक बीच से निकल जा रहा है, Used more frequently as a way for the teams to better police themselves. जो बीच से निकल रहा है, समझिए ना, एकदम माइंडफुल हो जाइए। ये कोई सिखाता नहीं किसी को, आप लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से सब लोग पढ़ के और एक्सपीरियंस जगह से आ रहे हैं। Improvements have also been made to the regulations wording regarding the distribution of points for shortened races, which sparked debate at the Japanese Grand Prix last year. The adjustments will make sure that full points are only given for races that finish at or close to their full distance, and that only partial points are given for races that are cut short or ओके, हो सकता है ये भी प्रॉब्लम है यार कि ये HD नहीं लगा था तब से, तो हो सकता है आपको टेलर मिल गया उसका, डोंट माइंड, लेकिन समझ रहे हो ना आपको क्या करना है, देख लो ना। cannot finish at their full distance due to interruptions. It has also been agreed that a winter shutdown will be implemented for both teams and power unit manufacturers. Other than these changes, मर्सिडीज AMC, ये यार एक बात बताओ, पावर यूनिट जो बता रहा है, आपने इसमें फोटो रख दी है, ये F1 कार है, वो उसकी इंजन की बात कर रहा है, ये कौन सी कार है ना? समझ में आ रहा है मेरा कैसे एरर है ये आपकी? जैसे आप पहले करते थे कि वो फेरारी बोली तो आप जनरल फरारी लेके लगा दिए, ये वैसी वाली प्रॉब्लम है, समझ में आया? पावर यूनिट AMG का है, लेकिन AMG पेट्रोना का पावर यूनिट दिख रहा है मर्सिडीज का, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये F1 की कार का है, समझ रहे हैं? F1 की कार का पावर यूनिट अलग हो सकता था, आई थिंक। अभी आप बताइए ये हाउ इट इज लाइक दिस। however, another piece of FIA legislation will be looming over everyone at the organization as the first race of the season approaches. फर्स्ट रेस ऑफ सीजन अप्रोचेस, यहाँ एक्साइटमेंट दिखा सकते थे आप लोगों का, राइट? यहाँ पे ये वाली गाड़ी का सीन का कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट रेस ऑफ द सीजन अप्रोचेस, इस लाइन का कहने मतलब है कि सीजन की पहली रेस आने वाली है, तो ये सिंगल गाड़ी का क्या कर रही है? Just before Christmas, the International Sporting Code of the governing body underwent a quiet. ये आप ये जो स्ट्रेच करके लगा रहे हैं ना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये HD में चल रहा है अभी, ये देखिए आपकी कैसी इमेज आ रही है। जब इमेज छोटी हो तो उसको फ्रेम में करके, कोई सुंदर से फ्रेम में करके, आफ्टर इफेक्ट इतना चलाना जरूर सीख लीजिए कि अपनी इज्जत बचा पाइए आप लोग, समझ रहे हैं ना? तो उसको स्ट्रेच मत करिए, उसे किसी फ्रेम में करके लगाइए। ये देखिए आप ये कैसे आ रहा है, कोड फॉर स्पोर्टिव नेशनल, ये देखिए कैसा फटाफटा सा आ रहा है। आप ये लिख सकते हैं अपने आप से, ये खट से बना सकते हैं ग्रेडियंट डाल के। इतना करने की हैबिट डालिए कि कोई चीज अगर खराब है तो सुंदर कैसे करना है अपनी चीज को। ये लोगो आप तुरंत लगा देते बाहर से, और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो ऐसी इमेज तो ढूंढ सकते थे जो इतनी लो क्वालिटी की नहीं हो। Update that reported. ये आपने दूसरा अपना मिली सेकंड का प्रॉब्लम देखा? Code of the governing body underwent a quiet update that ये देखा आपने कैसे आपकी कितनी सारी ब्लंडर्स हैं आपके काम में? reportedly for आप अपनी वीडियो को देखते नहीं है क्या दोबारा पलट के? bad drivers from making political, religious, or personal statements at competitions without prior authorization under a new article. The F1 drivers were questioned about the change through the various car launch events. अब ये सीन सही लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है, वेरियस F1 ड्राइवर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छा सीन लगाया आपने। देखिए जो सही करोगे वो सही कहेंगे, जो ब्लंडर करोगे वो ब्लंडर कहेंगे, और जिसमें इलॉजिकल काम करोगे वो भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव यू, राइट? और एनीवन, राइट? As was to be expected, once they were properly introduced to the public for the first time since the 2022 season finale. Although, अभी पता नहीं उसका क्या आपने कर दिया है, फिर से लाइन सुनूंगा मैं। changed through the various car launch events, as was to be expected, once they were properly introduced to the public for the first time since the 2022 season finale. Although not everyone was questioned, the message from the majority was the same. They were united against any restrictions on their freedom of expression. The most well-known and outspoken of his peers, Lewis Hamilton, has stated that nothing will stop him from discussing the topics and issues about which he is passionate. In the meantime, Max Verstappen, one of the drivers who refused to take a knee alongside Hamilton during the Mercedes drivers' protest against widespread racial inequality in 2020 and 2021, also voiced his displeasure with the new rule. But now that the FIA has clarified what it actually allowed in a document distributed to the teams and published on its website, what Verstappen said first is more interesting. The Dutchman claims that the action as a whole was possibly a little unnecessary. Really, that's an understatement. The clarification now explains that such expressions that would require approval are only rarely covered at specific times, typically involving competition or race promotion, the driver's parade, national anthem ceremony, cool-down room activities. National anthem ceremony,
cool down. ये इस तरह की फोटो नहीं लगानी चाहिए जिसमें सर भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए किस तरह की फोटो लगा दी आपने। कूल डाउन एक्टिविटी ठीक है, कोई भी दिखा देते, नॉर्मल बैठा दिखा देते या कुछ भी दिखा देते, ठीक है। ये ऐसी फोटो लगानी चाहिए जिसमें सर ही नहीं दिख रहा उसका। Room activities, the podium, and pre- and post-season photos. Additionally, drivers can speak freely when questioned by a Drivers can speak freely when questioned by a qualified journalist during press conferences and Additionally, drivers can speak freely when questioned by a qualified journalist during press conferences and interviews. यहाँ भी बेटा देखना, एक मिलीसेकंड का सीन दिख रहा है मुझे। By a qualified journalist during press conferences and interviews. ऐसा हो नहीं सकता कि मिलीसेकंड हो नहीं, लेकिन मैं इसमें पकड़ नहीं पाऊंगी, बहुत छोटा सा है। And interviews, but uncertainty and concerns about grey areas continue. Let's start with what the drivers can say to the media. First off, drivers hardly ever speak freely about topics unrelated to racing, and they hardly ever enjoy interacting with the media, which calls into question the necessity of codifying the situation given how these things previously operated. With Sebastian Vettel gone, questions on non-racing topics will no doubt fall even more onto Hamilton, but it is good to see Verstappen speaking up on this issue, the Dutchman aware of just how much more clout his words have as a double world champion. Second, according to the FIA's clarification document, the rules already placed restrictions on what could be expressed during activities on the track area, or an equivalent, even as a piece of clothing. There's also the issue of helmet liveries, which, despite not being specifically addressed in the most recent clarification, are the most visible element of any racing driver. एक बार बताइए, आपको डिवरीज को पहचान में नहीं आ रहा है कि ये डिवरीज कौन है? ये उसकी फोटो मिली आपको डिवरीज की। स्क्रिप्ट खोले अब आपकी, हम पढ़ के बताएं। डिवरीज ये है, उसका जो ड्राइवर है डिवरीज का, उसकी शक्ल दिखाते हैं आप। As a piece of clothing. There's also the issue of helmet liveries, which, despite not being specifically addressed in the most recent clarification, are the most visible element of any racing driver. Famously, Hamilton wore a rainbow flag-inspired helmet livery in the 2020. Oh, I think ये हेलमेट के बारे में बात कर रहा है, डिवरीज के बारे में, सॉरी, राइट। लेकिन सही है, समझ रहे हो ना कि हम लोग को किस किस चीजों पे ध्यान रखना है या दूसरे क्या ध्यान रखेंगे। On Qatar, Saudi Arabian, and Abu Dhabi races. कहेंगे कभी कभी टैक्स भी लिख दिया करो, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी रेस या कुछ कुछ। All countries अब उसमें भी फास्ट और झटका मत लगाना लेकिन। that have anti-LGBT laws. Qatar, back on the F1 calendar this year, is of course even bigger in the public consciousness since the 2022 FIFA World Cup, where team captains from some European nations were banned from wearing armbands in support of the same cause on the eve of the tournament under threat of sporting punishment. On the rainbow flag helmet livery, the understanding is that such a move would likely need a permission request. And this is the real issue. The F1 travels to numerous nations around the Good है, आपने ये चीज थोड़ी सच में कुछ चीजें आपने ध्यान से देख के बनाई हैं। world, many of which have, at best, dubious records in terms of human rights and freedom of expression, and at worst, abject ones. And it's perhaps in एक और इन्फॉर्मेशन, जब ये म्यूजिक बैकग्राउंड खत्म होती है तो वो उसमें फेड आउट लगाया करिए उसके ग्राफ को देखते हुए, और दूसरी म्यूजिक उसके नीचे से उठाया करिए, खत्म ना हो पाए तो धीरे धीरे चलती रहे, ठीक है। inevitable in our constantly evolving world that every time F1 races in such locations, their practices are discussed. According to FIA sources, there is a hint of annoyance. यही बार बार FIA आप लगा दे रहे हैं। FIA में कभी उनकी बॉडी दिखा दी, कभी दूसरा मैप दिखा दिए, बहुत झंडे FIA के। About the entire situation, that it's the F1 organization that is responsible for negotiating the contracts and bringing the racing to these locations, many of which are sport washing their reputations. F1 CEO Stefano Domenicali has declared that F1 will never gag anyone. कोई पोस्ट आया कर तो उसका नाम लिखने में लोअर थर्ड लगा के एक लोअर थर्ड ले लीजिए किसी से अपने में, राइट, ऑफिस से ले लीजिए और उसको वहां पे प्रॉपर्ली लगा दिया करिए, किसी का नाम आ रहा है, कुछ आ रहा है। This is admirable, but choosing to race in locations that pay a premium to sport wash in the name of profits brings us full circle to the need for progress to be seen in advancing human rights. And then the FIA comes back in with the rules. It's now helmed by Mohammed bin Sulayem, who is already thought by many, in the UK even by a member of the House of Lords, to be shielding F1 host countries from scrutiny over injustice. The FIA claims देखा ना आपने वो मोशन का आपने कॉपी पेस्ट मारा, वो क्लिप के जो उसका की फ्रेम को रह गया होगा, आपको उसको ड्रैग करके आगे तक ले जाना था। ध्यान रखिए ये सब चीजें, सब प्रोफेशनल लोग ऐसे काम नहीं करते हैं।
that the entire change was made to strengthen the FIA's long-standing commitment to preserving the neutrality of motorsport and to bring it closer into alignment with the International Olympics Committee. But this only provides a partial clarification. And for Ben Sulayem's own standing, given Paul Scriven's words written in a letter to the FIA president regarding the sport washing issue in the Middle East, a full explanation would surely be a positive step. It's not clear what started this whole story off, and when trust in institutions and authorities is so low, particularly in the FIA's case given Abu Dhabi 2021, and that the driver most harmed by that saga, Hamilton, and is now again thought by many to be being targeted for his outspoken views, it raises the question of why the changes weren't fully explained at the start, particularly with the timing of it coming so close to the World Cup. In the end, F1 has thrived, even during the years when some of the drivers have raised the most important issue. और बहुत ज्यादा फोटो नहीं, आप देखिए बैलेंस में चलिए, कुछ जगह रेस भी तो दिखाइए। अब यहाँ पे बात फिर यही वाली लगा लीजिए, वैसे रेस चला देते। F1 has thrived even during the years when some of the drivers have raised the most important issues in modern society. People want to see them be leaders, and yes, some don't agree. However, they should be permitted to continue without worrying about facing any punishment for doing so. It goes without saying that this is just another chapter in the conflict between the FIA and Formula One as a whole, which has dominated headlines in recent months. It will be interesting to see how matters like the rights of drivers develop once the season gets underway. Reflecting on the past couple of months of turmoil, former racer and renowned broadcaster Reflecting on the past couple of months of turmoil, former racer and renowned broadcaster Mark Blunders believes the two parties have fallen out of sync with each other, partly as a result of Formula One's rapid growth in the last half-decade. I would say Liberty have done a great job in growing Formula One globally. I think that's very obvious for everyone to see, Blunders said. No doubt the teams are very, very happy with that side of things, because एक ही तरीके का डब्बा हर जगह नहीं लगाया जाता है। Result of Formula One's rapid growth in the last half-decade, I would say ये देखिए, ये इतनी दूर नीचे का क्यों खाली है? इसको ये जो आपका वो है, इसका अपना रेशियो चेंज करके इसको आप इतनी दूरी रखिए जब यहीं तक है, जब इसके यहाँ तक आ रहा है। आप मेरा माउस हॉवर होता था, देख रहे हैं, पता नहीं 2C तक लगाया करिए। अब ये इतनी सी बात है, तो उसमें ये इतना आदि खाला किसके लिए छोड़ा हुआ आपने? मैं आके सिग्नेचर करूंगा क्या यहाँ पे यार? ये नहीं छोड़ना चाहिए ना। Liberty have done a great job in growing form. और एक और काम कीजिए नेक्स्ट टाइम से, ये जो आप आई वुड लाइक टू से इसके पीछे, यानी कि ये ग्रीन वाला है, इसके ऊपर और टेक्स्ट के पीछे एक ब्लैक मैट लगा के रखा करिए, और उसका भी विड्थ और हाई लेंथ का रेशियो चेंज करते रहा करिए, क्योंकि ये इससे अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझ रहे, इसके पीछे हल्का सा काला लगाया करिए, एक उसकी वो ब्लैक मैट को ओपेसिटी बहुत डाउन रखिएगा, जिससे कि हम ये टेक्स्ट अलग से थोड़ा महसूस कर सकें। Formula One globally. I think that's very obvious for everyone to see, Blunders said. No doubt the teams are very, very happy with that side of things, because it's only maybe, 4 years ago that you were looking at several cars on the grid that were very plain, with no commercial sponsors. Ultimately, F1 is the pinnacle. So I just think there's been a little bit of misalignment. That's एक बात बताइए, जब यहाँ तक कह रहा है वहीं तक का वो टेक्स्ट लगाया करिए, जब वो अल्टीमेटली की लाइन आ रही है तभी से वो आए। देखिए आप ये चीज कैसे कर रहे हैं, फिर से पढ़िए, यहाँ पे स्पॉन्सर्स तक पे ये टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए था। Plain with no commercial sponsors. Ultimately कहाँ गया यहाँ पे, क्यों नहीं आया अब तक? F1 is the pinnacle. So I just think समझ रहे हैं ना, तुम होशो हवास में आप लोग काम कीजिए। There's been a little bit of misalignment. That's never a good thing. It's also quite difficult for people to understand when there's, in effect, two sort of governing bodies, a sporting side and a technical and commercial side that are part of one sport. So the communication hasn't been clear. We've had several areas of ये देख रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, खाली बॉक्स एक डब्बा बना के रख दिया है, वो उसी में डालते जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे उसकी साइज क्या है, लेंथ क्या है। अब ये मत कीजिएगा अगली बार की, मतलब समझ रहे हैं ना आप क्यों क्या कह रहा हूँ? इसको बस इतनी दूर में कट करके लगाइए, और इसको भी ऐसे नहीं कि यहाँ मुंह पे आ रहा है, इसके प्रॉपर कंधे तक लीजिएगा उसको, और इस टेक्स्ट को थोड़ा डाउन करिएगा और इसके ऊपर से कट करिएगा। समझ रहे हैं बात को मेरी? The FIA being key communicators. बाकी PNG का साइज वो सही लग रहा है। Things that have gone on in F1 over the last sort of 18 months or so. What do you think of the FIA? ये देखिए आपने किस तरीके का वो यूज कर डाला है। FIA's change. ऐसे फोटोज किसी कीमत पे मत लगाया करिए। Do you agree with them? How? और ये कौन से FIA का लगाया हुआ? हमेशा उस वाले का लगाया करिए जो करंट प्रेसिडेंट हो FIA का, उससे रिलेटेड।
ये पता नहीं डॉक्टर बैठा है, कौन बैठा है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। सोचिए भी यहाँ कहीं डेट वेट ना लिखी हुआ करेगी, पकड़ ले कोई कि ये बहुत पुरानी फुटेज आपने उठाई है। Do you agree with him? How will the debate over drivers' freedom of press ठीक है ना, यहाँ पे ये आपकी मेन प्रॉब्लम वही है। How will the debate over ये जो मिली सेकंड का सीन छूटता है यहीं से लगाते हैं। drivers' freedom of press progress this season? बस ये बीच में क्या लगाने की जरूरत है वो झटके। Please let us know in the comments section below. If you enjoyed the video, please consider liking it and subscribing. Be sure to click the bell icon to be notified of future uploads. Thanks for watching. फोटो की क्वालिटी अच्छी रखी है, ये फोटोज अच्छी मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू। मेरे समझाए हुए अपडेट्स को आप और जितने भी नए एडिटर्स हैं सब लोग इसको फॉलो कीजिए। ओके फाइन, थैंक्स।